Students, today we will solve some of the questions of the vector. That is our last exercise related to the vector. Today we will solve such questions. One of the question is there, find the scalar component and magnitude of the vector. Find the scalar component. आपसे दो चीज पूछी गई, स्केलर कंपोनेंट और एक आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और वेक्टर क्या है? जॉइनिंग टू पॉइंट्स. द पॉइंट्स आर x1 y1 z1 and x2 y2 z2. There are 2 points x1 y1 z1, x2 y2 z2. Joining these 2 points, it forms a vector whose magnitude we have to calculate and find out the scalar component of this vector. So first, whenever vector joining 2 points, that we have to calculate by the triangle of vector additions. First we will join this point with the origin. Again we will join this point to the origin and join both of them. That is, suppose this is the point A, point B. So like that the geometry we will discuss there. X, Y, Z. Point 1 is A. Coordinate of this is x1, y1, z1. Point B is there. That's coordinates are x2, y2 and z2. So join this A to O. Now we can say position vector of A with respect to O, that is defined by OA vector. Again we will join OB vector. Join A to B, that is AB vector. Now by the triangle of vector addition we can describe OA vector plus AB vector equal OB vector. Now from there AB vector equal OB vector minus of OA vector. OB vector we can describe x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus of OA vector x1 I cap y1 j cap plus z1 k cap. From there we can calculate x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. This is the vector A B. तो हमारा क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? तो मैग्नीट्यूड, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर? तो दैट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. Now second question is that scalar component. Scalar component meaning इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन कौन है? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. These are the scalar component of a given vector AB. So this is the question 1, scalar component and the magnitude of the vector. There are 2 things we have to calculate in the given question. So how can you calculate like this? Next question, that is based on geometry. So just I would like to draw the geometry first. Question number 3 of miscellaneous. Students, read it the question properly. Thereafter you try to solve, then the procedure is very easy to solve the questions. Now the question is, a girl walks 4 kilometers. For the direction questions we will draw the first direction notation. This is north, south, east and west. Right? Question is there, a girl walks 4 kilometers towards
east, towards west. Suppose girl is there. She walks towards 4 kilometer west, meaning suppose this is the 4 kilometer total. Axis corresponding unit vector if we defined I cap, j cap. Thereafter negative I cap, negative j cap. 4 kilometer up to she will be here. Thereafter she walks 3 kilometer in direction 30 degree east of north. 3 kilometer 30 degree और डायरेक्शन बोल रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीनिंग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ. हम सबसे पहले यहाँ नॉर्थ डिफाइन करें एक बार. पैरेलल टू द नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज द नॉर्थ रिप्रेजेंटेशन. यहां से 30 डिग्री और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, राइट. तो 30 डिग्री का एंगल आप फॉर्म कर ले. ये यहां 30 डिग्री का एंगल और कितने किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर. अब 30 डिग्री कहां बनाया उसने? ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीनिंग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ. तो दिस एंगल इज 30 डिग्री. द फॉर्म्ड एंगल इज 30 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री, राइट. नाउ द गर्ल स्टॉप देयर. यहां स्टॉप हो गई गर्ल. अब पूछा गया आपसे डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. Initial point of departure is this, and now she is here. From here to there we have to calculate this displacement. What is this? For which we will draw the perpendicular from here to there. That is, this is the perpendicular that is drawn here. Suppose this is the point O, this is point A, this is point B. Let that is C. If this angle is 60 degree and this is measurement of this is 3. So now AC is by the, we can calculate A, B, C. This angle is 60 degree and this measurement of this is 3 and that is 90 degree. So this base is to be defined AC equal AB cos 60 and again BC equal AB क्या लिखोगे? sin 60. इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए बी इज 3 cos 60 1/2 3 इंटू रूट 3/2 दैट इज 3/2. इट इज 3√3/2. These two things you have to calculate here. So this distance is 3/2 up to C. Then this remaining CO is, ये कितनी होगी? CO इक्वलेंट टोटल OA माइनस ऑफ AC. OA इज 4 माइनस AC इज 3/2. तो रिमेनिंग विल बी 5/2. दैट इज CO. क्लियर? नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस गर्ल फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, that is BO vector, and the direction of unit vector I cap in the OE direction, that is positive, whereas it is in negative. So the displacement of BO vector, if we calculate OB vector, तो by the triangle of vector addition we can calculate कितना होगा? OC vector plus CB vector equal OB vector. That we have to calculate. Now OC vector plus CB vector equal OB vector. Now OC vector is minus 5/2 I cap, opposite direction. ठीक है? This is the positive direction of J cap. BC vector is defined 3√3/2 J cap. This is the
displacement of that girl from the point B to O, which is defined by OB vector. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ें. इस गर्ल ने अपने इस ए पॉइंट से जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री, पर उसकी जो डायरेक्शन थी वो थी नॉर्थ टू ईस्ट, मीनिंग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ. तो नॉर्थ आपको पैरेलल ऑफ द नॉर्थ यू हैव टू ड्राइव दिस, एंड फ्रॉम देयर द एंगल इज टू बी 30 डिग्री. बट for measuring we have to consider this angle 60 degree, which is remains here. Now on which we calculate AC as well as AB. Again by the triangle of addition we can calculate the OB vector by this process. So guys, properly solve the question in a proper manner. Again one of the question is there. There is one question, find the value of x for which, find the value of x, find the value of x for which x bracket I cap plus j cap plus k cap is a unit vector, is a unit vector. आपसे क्या पूछा गया? वैल्यू ऑफ x, और कह रहा है दिस इज ए यूनिट वेक्टर, लेट दिस इज ए वेक्टर. मान लो कि ये क्या है? ए वेक्टर है. तो अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल 1, और वी कैन से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल 1. Now again we will write it in the form of this, that is equivalent to the 1. How we can open the magnitude of this vector? That is the root of, कैसे ओपन करोगे? Now take root magnitude square of I cap square of j cap coefficient plus coefficient of this is equivalent to 1, or we can say 3 of x square equal 1, or we can say x root 3 equal 1, or x equal 1 upon root 3. This is the question. Now come on next question. Students, read it proper, thereafter try to solve in a proper manner. Suppose the question is there, I cap dot j cap cross k cap plus j cap dot I cap cross k cap plus k cap dot I cap cross j cap. What I find out the value of this product. Now we will product them. I have already told in my earlier classes, the cross product is, if they are in a cyclic order, then it is to be taken considered their perpendicular unit vector, or if they are not in a cyclic order, then it is to be taken as a negative unit vector. Now I cap dot, अब इस साइक्लिक ऑर्डर को हम बार बार करेंगे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, तो प्रॉपरली आप राइट कर लें. I cross j, j cross k, that is represented I cap plus j cap dot I cross k, डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गई, तो माइनस ऑफ j cap प्लस k cap dot I cross j, k cap, right? Again I cap dot I cap, minus is to be taken outside, plus k cap dot k cap, dot product of similar vector, that is 1 minus 1 plus 1, result is 1. Now I think this is very clear in your mind how the product and dot is to be solved in a proper manner. So every student solve this exercise in their copies properly, one by one questions. Again there is a question, there are two unit vector A and B,
there are two unit vector. A and B are two unit vector. It is given, right? And the theta is the angle between them. Theta is angle. That is also given. Another, then A plus B is a unit vector. ये कह रहा है A plus B is a unit vector. When? कब होगा? Right? अब कह रहे A and B are two unit vector. तो इसको कंक्लूड करोगे तो क्या रिजल्ट हो गया? यूनिट वेक्टर, इट मीन्स 1. और इनके बीच एंगल थीटा है, तो अगर हम इस बात को वर्कआउट करें तो A डॉट B इफ वी विल टेक दैट इज रिटर्न मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, राइट. अब कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो जब यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड का हम क्या करें? होल स्क्वायर ले लें, विच इज डिफाइंड बाई वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B. Square of a unit vector is defined by dot product. Now we will open, square ले लेंगे तो भी वही आएगा. Now we will open, this is dot product. ओपन कर लो, क्या आता है देखो, A डॉट A मैग्नीट्यूड ऑफ A होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B होल स्क्वायर प्लस 2 magnitude of A vector B. This is the we will get from the dot product of these two, which is equivalent to the, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये किसके बराबर हो गया? 1 के. नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू द 1. नाउ इसकी वैल्यू आपको पता है 1, इसकी वैल्यू आपको पता है 1, 2. A डॉट B की वैल्यू आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा इक्वल 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू भी आपको पता है 1, 1, दैट इज इक्वलेंट 1. इस 1 से इस 1 को कैंसिल करो और 2 कॉस थीटा इक्वल -1, और कॉस थीटा कितना हो गया? -1/2. थीटा क्या हुआ? कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2. अब 0 to पाई क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और 1/2 कॉस ऑन विच एंगल इट गिव्स? इट मीन्स साइन गिव्स ऑन 30, कॉस गिव्स ऑन 60. तो यहां पर एंगल कितना हो गया? पाई माइनस π/3, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 2π/3. राइट है या नहीं है? तो एंगल क्या आ गया आपका यहाँ पर? थीटा इक्वल 2π/3. So solve in a proper manner of this question. According to this, properly solve in your copies or read it first proper, thereafter try to solve the question. Again, ये कह रहा है डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड विच इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. कब हो सकता है? एक सिंपल क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट विच इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. देयर इज क्वेश्चन ऑन विच थीटा. यहां पर दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट्स मैग्नीट्यूड विच इज इक्विवेलेंट टू द क्रॉस प्रोडक्ट. तो आपको पता है इस डॉट का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो क्या आता है? कॉस थीटा. इसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप विच इज इक्विवेलेंट टू द 1. यहां ये कैंसिल हो गया इससे, कैंसिल हो गया इससे, और इसकी वैल्यू 1. कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोथ ऑफ देम आर इक्वल 1 whenever theta is π/4. So this is the answer of your question. Same like that, different questions are there. Student, properly you just go through with the questions and solve each and every question. Whoever is doing there in a proper manner in their notebooks, who will be understanding the chapter properly. Most of the students, they are sending their worksheet result on my personal WhatsApp. They are getting good marks. Some of the questions they are having some trouble in 1 or 2 questions only and only, that is the error in calculation.
So again I will say to all of the students, concentrate on your work, what is to be mentioned in the question and what am I doing now. Exactly, am I go through with the question or not? Whether I have written the question which is similar to the given question or not, check it, match it. Thereafter try to solve the question in a proper manner, then you get the answer which is exactly once. So again, hope that all you are doing in a well manner. Solve this exercise in a proper way in your notebook. Thank you very much.